हाय गाइस, वेलकम बैक टू ब्यूटी विद ज़रबाश। आज हम क्रिएट कर रहे हैं एक सुपर ग्लैम फेस्टिव लुक, पिंक ग्लिटरी स्मोकी आईज, फ्रेश ग्लोइंग स्किन और सॉफ्ट ग्लॉसी पिंक लिप्स। ये लुक परफेक्ट है फॉर द शादी सीजन या कोई भी फैंसी फेस्टिव ओकेजन। Am I really that much? And breaking these niggas down like a camel. You don't really just throw you up. Before we start, make sure you subscribe to my YouTube channel and press the bell notification so you never miss a glow up moment with me. Let's get started. सबसे important है skin prep. कोई भी flawless makeup का secret होता है एक smooth and hydrated base. To prepare my skin, I've used a moisturizer, MAC Fix Plus spray and ELF का primer. Starting with the eye makeup first, हम एक glittery smoky look create कर रहे हैं, so we want to avoid the fallout. I'm applying a thin layer of concealer. आप eye primer भी लगा सकते हैं and set it lightly with translucent powder. Eye base लगाने से your eyeshadows appear more brighter, more vibrant and they stay on for a longer time. अब मैं काजल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ and I'm applying it on the lower waterline as well as the upper waterline, also called as tight lining. Tight lining makes your lashes look fuller and gives that intense smoky effect without adding more product. अब मैं इसी काजल को स्मच कर रही हूँ using a smaller brush and with a brown eyeshadow. Gently blend the lower lash line as well as the upper lash line for that soft smoked out effect. One trick, keep your inner corners clean for your eyes to look more lifted. ज़्यादा smokiness या ज़्यादा intensity outer corner तक focus रखें for a lifted eye look. Next, I'm taking this Morphe palette. It's a great palette. I use it a lot. इससे मैं अपना transition shade लगाऊंगी. I've picked up this soft pinky brown kind of a color, blending it into the crease using back and forth motions. ये हमें एक beautiful transition देगा for that glittery glam. आई एम यूजिंग अ फ्लैट आई शेडो ब्रश. आप अपनी फिंगर टिप्स भी यूज़ कर सकते हैं और मैं ये पिंकिश सिल्वरी शिमरी शेडो लगा रही हूँ ऑन टू द आईलिड्स. दिस शेड विल एड अ लुमिनस पॉप एंड हेल्प ब्राइटन योर आईज. फॉर अ मोर इंटेंस शिमर, slightly dampen your brush with setting spray before dipping into the shadow. Blend out any harsh edges with a clean blending brush to ensure a smooth transition with the surrounding shades. On same palette से मैं यूज़ कर रही हूँ ये light shimmery shadow and applying it on the brow bone. This area naturally catches the light, so adding a highlight here lifts the eye and creates a more open, refreshed look. Taking a blending brush and smoothing out all the shadows so there are no harsh lines. अब हम ब्राउज को सेट करेंगे विद NYX कॉस्मेटिक्स की ब्राउ जेल. जस्ट ब्रश द जेल थ्रू योर ब्राउज फॉलोइंग द नेचुरल शेप. ये जेल ब्राउज को शेप भी देता है एंड इट विल कीप देम इन प्लेस फॉर अ लॉन्गर टाइम. Next, I'm taking a dark brown shadow from the same palette and packing onto the outer corners of the eyes. Use a small brush and gently press the color in, focusing on the outer V area. This step adds depth and drama, giving that classic smoky effect. Blend the edges softly but keep the intensity concentrated on the outer corner. Before I apply false lashes, I'll give my lashes a boost with this Rimmel mascara. This will give my lashes instant volume and depth which perfectly complements the smoky eye. अगर आप false lashes लगा रहे हैं, natural lashes को lift देना उनका base strong बनाता है. अब मैं ऐड कर रही हूँ false lashes for that extra volume and festive glam. These lashes are from Rivage. It's a great makeup brand which is locally available and has such good affordable makeup products. Now I'm clearing my under eyes before moving on to the foundation. Be gentle with this area because the skin here is very delicate. Coming to face, मैं यूज़ कर रही हूँ Core Natural की foundation. It's my new favorite. It's a full coverage foundation, but आप जब इसको अप्लाई करते हैं it feels very lightweight और केकी बिल्कुल भी नहीं लगती. So आप अपनी foundation एक ब्रश से भी लगा सकते हैं, but I'm using a damp beauty sponge for a more skin-like finish. Next, I'm using ELF Cosmetics का concealer, using a small amount and dotting it under the eyes and anywhere where I need extra coverage या किसी भी area को brighten up करना हो तो. I'm using my beauty sponge to blend the product. Gently tap करें, don't drag. This keeps the coverage where you want it while blending smoothly. Next, I'm going in with Makeup by Mario Stick Blush. This shade gives such a beautiful pink flush. So this product melts right into the skin for a radiant dewy finish, so fresh. Now that the cream blush is on, it's time to set everything in place. मैं यूज़ कर रही हूँ Light Translucent Powder by Laura Mercier and I'm pressing it gently under the eyes and around the T-zone. ये step help करेगा to lock in the makeup, control any shine and keep everything looking smooth all day.
Using the same brown shadow from the Morphe palette and applying it on the lower lash line, always build your shadows gradually. Light hand use करें and keep blending. Patience is key for smoky eyes. I'm highlighting the inner corners of my eyes जो instantly brighten up कर देगा whole look को. That little pop of shimmer or light tone catches the light and adds glam, tying the whole eye makeup together beautifully. अब मैं ऐड कर रही हूँ touch of liner to the inner corners and gliding it along the lash line. Nothing very prominent. This step adds depth and that elegant edge to the smoky eye. Just a small detail, but it makes all the difference for a festive glam look. अब मैं ऐड कर रही हूँ some definition to the face with contour. मैं certain areas of the face को sculpt कर रही हूँ, जैसे jaw line, under the chin. You do it below the cheekbones, blending upwards to lift and shape the face and sides of the nose. अब मैं ऐड कर रही हूँ अ पॉप ऑफ कलर विद दिस फ्लोरमार पिंक ब्लश. फ्लोरमार इज़ अ ग्रेट ड्रग स्टोर ब्रांड. इनकी प्रोडक्ट रेंज बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट्स की फिनिश बहुत अच्छी है. सो दिस प्रोडक्ट हैज़ द परफेक्ट हिंट ऑफ शिमर टू ब्रिंग लाइफ बैक टू द चीक्स. इस तरह का शिमरी पिंक ब्लश एक ऐड करता है हेल्दी यूथफुल ग्लो, सॉफ्टनिंग द कॉन्टोर, कॉम्प्लीमेंटिंग दिस पिंक आउटफिट एंड एडिंग दैट फ्रेश फेस्टिव रेडियंस. नाउ द फन पार्ट, ग्लिटर ग्लैम मोमेंट. मैं यूज़ करी हूँ ये पिक्सी ब्यूटी का ग्लिटर पैलेट एंड आई एम अप्लाइंग दिस ग्लिटर विद माई फिंगर मेनली ऑन द सेंटर ऑफ द आई लिड. सो ये स्टेप आपके आई लुक को बहुत फेस्टिव करेगा एंड विल मेक इट वेरी ग्लैम्ड अप. Lashes are already on. I'm adding a light coat of mascara to blend my natural lashes with the false ones. This helps everything look seamless and adds that extra lift and drama to the eyes. Finishing off with this gorgeous pink lipstick by Sweet Touch. The color is just wow. ये color add कर रहा है that perfect pop, tying in with the blush, going well with the outfit and instantly brings the whole look to life. जो भी products and colors मैंने use किए हैं, they are listed in the description below, so don't forget to check that out. टॉप इट ऑफ मैं ऐड कर रही हूँ अ टच ऑफ ग्लॉस. मैं यूज़ कर रही हूँ इंग्लॉट का ग्लॉस. अगेन द कलर इज मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. सो दिस पिंकी ग्लॉस मेक्स इट मोर फ्रेश एंड एक्स्ट्रा ग्लैम. To lock everything in place, I'm finishing with the one size makeup fixing spray. This will melt the makeup together, keep the glam fresh, no touch-ups needed, just set. And that's the final look, guys. A pink glittery smoky glam with fresh glowing skin and pink lips. Perfect for any celebration. अगर आपको ये look पसंद आई हो, please give it a thumbs up, comment below your favorite part and don't forget to subscribe to Beauty with Zarbaj for more glam tutorials like this. See you in the next video, guys. Lots of love.